आपका आज वीडियो में स्वागत है। और 2 दिन पहले हम लोग ने महिंद्रा स्कॉर्पियो की वीडियो देखी थी, लेकिन उसमें फुल रिव्यू नहीं दिया गया था, यानी कि ऑन रोड हम लोगों को रिव्यू नहीं देखने को मिला। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड ने हमें सजेस्ट किया था कि हम लोग ऑन रोड जो भी उसके बारे में रिव्यू होगा वो देखें जाने, क्योंकि हमारे रिव्यू मतलब मेरे रिव्यू कुछ और थे इस वजह से भी और मोदो के कुछ और थे इस वजह से भी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मौजूद बताएंगे टाइटल है 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन रिव्यू, टफ एज एवर बट मोर सोफिस्टिकेटेड, फर्स्ट ड्राइव ऑटोकार इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I'm not a stranger. I was the kid who would never back down. Y'all get the anger, I get the paper. I gotta win, so I'm never last out. Butterfly stomach, cause I really want it. I come from the dark, so cut the lights out. Heart of a lion, the steps of a giant. Don't step in the ring, cause I'll never tap out. 7-seat SUVs are popular these days, but almost 20 years ago, one of the first few to set the trend was the homegrown Mahindra Scorpio. Now that car's had a few updates and changes and engine changes, but it's remained the rugged, upright SUV that had a very bouncy ride. Now 20 years later, Mahindra are giving us an all-new Scorpio, and nothing remains the same with the old Scorpio except for the name, and even that has an N tacked on to the end. So this is all new. How much has it evolved? Has the ride changed? How's the engine? How's the performance? I'm going to tell you all of that and more in this video, but first the price. Now Mahindra have priced this very competitively. They priced it from 12 lakh to 19.5 lakh for the manual variants. The automatic prices are going to be announced later. They're betting big on this, and they're calling it the big daddy of SUVs. Can it go big? Well, that's what we're here to find out. So do watch this video right to the end, and remember to hit the subscribe and the like button. और अगर आप ये वीडियो हिंदी में देखना पसंद करेंगे, प्लीज चेक कीजिए Autocar India चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। The Scorpio is still a body-on-frame construction, but this time it's a new platform, the same one as on the new Thar. It's lighter and stiffer to ensure better dynamics, and there's a lot of high-strength steel used to ensure Mahindra maintain their track record of a good NCAP rating. It's also the reason this new Scorpio has only forward-facing third row and no side-facing ones. Dimension-wise, it has grown in length, width and wheelbase, but it's lower in height than before. Ground clearance is 170 mm laden, which means when it's fully loaded. But honestly, we had no trouble going over a lot of the rough road sections. Now what's changed is the very flat square lines that the Scorpio had before. The front and rear screens are more raked, the window line kinks up to the rear, and the creases on the side are softer too. It sits on a smart set of 18-inch alloys, and there is black cladding around the wheels and at the bottom of the doors, but it's not as prominent as before. There's a footboard on the side to help you step up into the cabin. The windows are also underlined in chrome that kinks up at the D-pillar and over the rear glass to imitate the lifted tail of a scorpion. The front carries the Mahindra trademark grille with chrome look slats, and it's flanked by the double barrel headlamps and LED brows. Lower down, the fogs also have a LED surround that imitates the Scorpion sting again. A beefy chin, skid plates and a long bonnet give it the butch SUV look. The Scorpio N does have attitude, but the rear is probably the most unflattering part of the car, and the vertical stack lamps that imitate a Volvo actually make it feel a bit disproportionate. Now this tailgate is very large, and it opens outwards, not upwards. So if you park your car in a garage, you're going to need a load of space behind it to open out this very, very large tailgate. It is scooped to accommodate luggage once all 3 rows are up, but the space there is very tight. The floor kind of curves in, so the largest open space is actually in the middle, where you can get a haversack or a strolley in. But apart from that, I doubt you'll get very much into the back of this car. On the sides, as I'm showing you, it's narrower, so you really can't fit a strolley or anything large size in even vertically over there. So just about one bag will come into the back of this. Let's flip the seats down and see if we can open up more room. Yep, once you flip the seats down, there is more space here.
But again, it's narrow, so you know, fitting a large suitcase, you probably have to line them up standing over here and get your 2 suitcases in, and I think that's about as much as you would pile in. You could possibly also flip the front seats and add more luggage, but then that would need no passenger room. Now the spare tire, and as I can see it, there is no release for the spare tire over here. It's from underneath, so on a rainy day like this, to get under your car and open that out would be a bit of a bother. In a large size SUV, one expects a lot of room for luggage, and though the Scorpio is big enough, the way the seats fold and flip creates pockets of space instead of a flat storage area. Now, if someone had just sat you inside this car and told you this was the all-new Scorpio, you would not believe it, because that's how much this interior has evolved, and it is completely modern, new and very fresh looking. You get a dual-tone dash, you get a nice leatherette finish that runs right across the dashboard. This dual tone coloring is on the seats as well, which has a nice stitching around the edges, and it's got a perforated finish. So yeah, quality looks very good. The plastics are a little hard, but it's textured very well, so it really doesn't look like hard plastics around the cabin as well. So overall quality looks very good. You get a nice satin chrome finish which surrounds the central console. In the middle of it, of course, is the 8-inch touchscreen. Now this has Android Auto and Apple CarPlay, but you cannot connect Apple CarPlay wirelessly. Though the feature list states it, Apple CarPlay was not available on our test cars. There's a host of features here, and you have the Sony 12-speaker system with 3D surround sound. And if you want to know more about the connected features, the infotainment system, what it has, and how the sound system is, well, click on the link on the video right now, because the editor of our sister magazine Stuff will explain all the tech details to you. But moving on, there's a nice steering wheel with all the steering controls. You also get analog dials and an MID, which have a host of functions similar to the XUV700, but the usability of it has improved. In the center, you have the aircon controls, the rotary knobs. Those of you who watch me regularly will know that I prefer rotary knobs. They're just so much more intuitive to use. There are toggle style switches below this for shortcuts, just like you've seen in the XUV700, and below that you have the wireless charger over here for your phone. You have 2 USB-A ports. You have cup holders, you have a shallow bin here for storage. You also have a glove box, which is fairly large and nice. You have door pockets as well, and it can hold a 1-liter bottle, but accessing the door pockets is a little hard. It's very close to the seat, the edge of this door, so there's very little space to get things in and out of, and if you wear a bracelet like me, it tends to graze and scrape the side of the car. Seat has power adjust for the driver's side. The passenger side is manual. There's a nice big grab handle over here, big and chunky to give you that full-on SUV feel. You get the satin finish along these chunky door handles as well, and the door opening handles too here, piano black touches that you see around the cabin. So overall, it does look very rich, and it does come with quite a few features. Let's take a look at those. On the feature front, you get the sunroof, a 12-speaker Sony music system, wireless charging, dual-zone ACs, but there are no ventilated seats or paddles and no telescopic adjust for the steering. There's no auto-dimming mirror and no blower for the third row. And while the infotainment system had a lot of features, the camera was a little laggy, and like I said, Apple CarPlay was not available. To get into the second row, it is a bit of a climb in, but you do have the footboard and a handle to grip. Now, we did get 3 people into the bench seat version and found it to be good enough. Shoulder room is ample and the bench feels wide enough. So 3 of us in the back seat now of the bench version, which is in the petrol automatic, and I have to say it's not bad. Floorboard is flat. Nishant, are you okay? Yeah, pretty comfortable. Yeah, and I think there's enough leg room for him as well, and we've got a decent amount of shoulder room for the 3 of us. I can actually make more space on the side as well, so yeah, I think enough space for 3 in the back on the bench version. Now later in the story, I will tell you all about the captain seat variant as well, about its space, convenience features and ride comfort, but for now, let's check out the third row. Well, we're going to talk about accessing the third row now.
From this side of the car, this seat is just a flip down. So I'm going to come that side and show you the one-touch tumble. And as you heard from that side, the doors close. Actually, let me show you with a nice thunk. And this is it. It's a single flip, very easy. And lots of space to access the third row. Now, once you're in the third row, what you have to know is that the middle row does not have rails. So you can't adjust space between the middle and the third row. There is a fixed amount of space over here. It is quite low to the ground. I am quite knees up. And there is a little bit of space. I can stretch my feet out under the seat in front of me. So yeah, for someone my size, you could possibly sit here on a long journey because the window area is also quite big and nice. So it doesn't feel too hemmed in. But honestly, it's not the best amount of room in a third row. And there's no recline for the seat back either. Yes, when Nikhil got in to do his piece to camera for the Hindi channel, yes, you can watch his video on Autocar India because he's doing the Hindi story this time around. The third row was a tight squeeze for him. So it is a no-no for taller people. It's just kids and people like me that would be okay. बच्चों के लिए सही. Now while getting in is one touch. छोटे बच्चे. हाँ, छोटे बच्चे. हाइट जिनकी ज़्यादा होती है वो लोग बच्चे भी नहीं एडजस्ट कर सकते. मतलब आप कंफर्टेबल. Well, with all roads checked out, it's time to get the show on the road. The Scorpio will come with two engine options, a 2-litre turbo petrol with 203 HP which has 370 Nm of torque for the manual and 380 Nm for the automatic. And then there is the 2.2-litre turbo diesel that will be available in two power ratings, the 132 HP version and the 175 HP version, which is the one I was driving first. Get behind the wheel and you sit in a nice high commanding position. Visibility is great with lots of glass area and the car actually feels very light on its feet. So you'll find it easy to maneuver in city traffic. I'm driving the 2.2-litre turbo diesel which has 175 HP and 400 Nm of torque. That's because I'm in the automatic variant. The manual has a little less torque, that's at 380 Nm. Now, it doesn't have the mid-range punch that the earlier engine had. The power delivery is more linear, so it masks speed, but you build up speed pretty quickly. It is quick, and you do get a good slug of power every time you put your foot down. While the mid-range surge is missing, performance of this diesel overall is impressive. Overtakes come effortlessly, and in our initial test, the diesel did 0 to 100 in about 11.25 seconds. But I must mention that this test was not in the ideal autocar conditions. There are no paddles, but the 6-speed automatic works quite well. Shifts are smooth and they come easily enough. Yeah, if you do stomp your foot down, it does have that typical slight hesitation before it shifts down. Gentler acceleration brings up the shifts much better. So when you are at lower speeds and in city driving conditions, the auto box works well to make driving a breeze. And in traffic conditions like this, the creep mode works pretty well. Lift off your foot and the car gets rolling on quite easily. It actually crawls at a pretty decent speed. So there is no jerkiness or sudden surges. The progress from standstill is easy, and it also means you can edge along in slow-moving traffic with ease. Now you do have the drive modes, zip, zap and zoom, like you had them in the XUV 700 as well. This is for the diesel variant. And zip basically is the mode that you would use for fuel economy, zap of course for city driving, and zoom when you're out on the highway. But honestly, there isn't much of a step up between the different modes. There is a marginal change in the response of the gear shifts and the throttle. So city or highway, the Scorpio N is comfortable in its stride. There is an area that it could do with a little improvement though.
The brakes are a bit grabby. There's a lot of travel in the pedal and then they suddenly catch. So it's something you really have to get used to. Another area where the diesel engine could have been better, especially considering M&M's own track record, is refinement. The engine is quite refined, but push it hard and you will hear it. It is a bit noisy and boomy. You do hear the clatter of the diesel engine. But apart from that, cabin refinement overall is very good. So you don't really hear much else from the outside. You don't hear the suspension or road noise filter through. A lot of work has been done by the engineering team at Mahindra & Mahindra to ensure dynamics that can keep up with the kind of performance that the new Scorpio N delivers. And it definitely shows. The steering is quite light at low speeds, so you'll find it very easy to twirl this car around in the city and nip in and out of traffic gaps. But as you pick up the pace, it weighs up quite well too. It's got a good on-center feel, so you get a lot of confidence at higher speeds out on a highway. And even during cornering, it puts the car where you want it to go. And the way that the new Scorpio N goes around corners comes as a pleasant surprise. Though there is body roll, it is well contained and there is an agility that you don't quite expect. The good dynamics also mean that backseat passengers will now be far more comfortable, which is what I found when I hopped back there. The middle row of the Scorpio N has a good amount of leg room. The back of the front seat is scooped out to make more space for knee room, and I think there's enough even for taller people. You can stretch your feet out under the seat as well. The seats themselves are extremely comfortable. You have an armrest, but the issue really here is that this seat doesn't have a slider, so you can't open up more room for yourself and get more comfortable or make more leg room for yourself or adjust space between the third row and the middle seat, because this is a fixed seat and that's a big miss, I think. However, you can recline this. So once you recline and stretch your legs out, you can get pretty comfortable for a long journey. On the practicality front, you do have the air vents, you have blower control over here, you have a USB-C port, you have pockets in the door, but the space here again between the seat and the door is very marginal, so getting your hand in and pulling something out is a bit of a tight squeeze. Headroom, I think, is okay because the roof is scooped out here, but taller people might find that this portion right here in front sort of takes away a little bit from the feeling of space. Otherwise than that, you sit up in a nice high position, so visibility to the front is good. It's a nice big window area, so it does feel nice and open and airy, and it is pretty comfortable back here. The puffins at M&M have not only worked on dynamics, but they've also worked long and hard to ensure that the sore point of the earlier Scorpio, its bouncy ride, was a thing of the past. The roll center of the car was worked on to ensure stability, and a long travel suspension with frequency-dependent damping was used to smoothen out the ride. Now, where you'll find the biggest change in this new Scorpio N is in ride quality. Gone is that bouncy feeling of the backseat where you were tossed up like a salad. This one is much flatter. It is more composed. There's less body roll. So overall, the ride quality is much better. And there is a pliancy to this ride as well, which doesn't let much of the road filter through. As you pick up the pace, it stays flat and comfortable as well. So yeah, ride quality on the whole is a massive improvement. But one has to remember this is a body-on-frame, and though it's really well engineered to keep passengers comfortable, there is a certain amount of stiffness over rumblers and broken roads that will filter in. Now, this back seat is spacious and it is comfortable enough, but honestly, if you're looking at the top-end variant of this car, at this price, you could get even better, and you could get even better from within the Mahindra family. The XUV 700, for instance, would offer you more space and more comfort. Well, after spending a considerable amount of time in the diesel and bringing you all the details, it's now time to shift over to the next car. So it's time for the petrol automatic now, and this engine feels very, very refined, and the engine and gearbox work well in tandem to ensure you've always got power. So it feels nice and strong. Dump your foot down and you get a good slug of power for an overtake.
The petrol engine feels lively, and in our initial test figures, it threw up a 0 to 100 in 10.2 seconds. Once again, I mentioned this was not in ideal autocar conditions, and it may be quicker in the actual road test. This engine and gearbox combination, however, is the better one, and responses definitely come quicker. There are no drive modes in the petrol, but there are none needed either. And while power is not punchy, you still get a strong linear pull of power right up to the red line. The turbo petrol is delightful, serving up a healthy dose of power whenever you want it. And that's just not it. It's also in the way that it tackles the road that makes it even better. Overall, the handling on this petrol variant feels a lot better. The steering feels more connected. It gives you more feedback. The nose darts into corners with more agility, and it just feels more stable, planted and sure-footed. You can actually have fun around the corners with this one, and that is something I never thought I'd say of a Scorpio. Before I wrap it up and sum it up, I'm now in the four-wheel drive variant of the Scorpio N, and we're on an off-road track to thoroughly put it through its paces. The four-wheel drive system is quite advanced, and apart from electronically activating four-wheel low and four-wheel high, you can also dial through various modes like sand, snow, mud and rut and normal. These have been carefully calibrated and use the ESC and four-wheel drive to modulate power to the wheels where it's needed. It also has brake lock differential for front and rear and mechanical lock differential at the rear. Now for my trip, I had selected four-wheel low and mud and rut. And honestly, the Scorpio did much more than I expected it to. Slushy slopes, steep, slippery inclines, rocks, smooth rocky surfaces. I think we've thrown pretty much everything at the Scorpio, and for those who are worried about ground clearance, I say don't worry, because this pretty much goes through everything. Haven't had an issue at all. There are lots of rocks and little boulders in our path, and it hasn't bottomed out anywhere. It's sailing through. The Scorpio N also has 500 millimeters of water wading depth, so the small puddles we went through were really no trouble at all. The Scorpio N will come in a multitude of variants, and we counted 25 of them. The prices for the automatic will be announced in July, with deliveries expecting to start in the festive season. Also, a key point to note is that these prices stand true only for the first 25,000 bookings. As you can see, this is a very capable car. I mean, I was doing that a little earlier, and when I saw it from inside the car, I thought impossible, this is not going to go through. But it does, and it does so easily and smoothly, you just can't believe it. And it's not only capable in these off-roading conditions, even out on the road, it's got two really nice engines with great performance. Ride and handling is very good. In fact, the handling is something that you don't expect from a Scorpio. So this Scorpio N has evolved on many levels. It may not be the best in areas like third row, the feature list or luggage space, but it does still have enough of all. And yes, it does have sting, it does have bite. With the kind of prices that Mahindra have offered, it makes for a very compelling car. One of the first few to set the trend was, what am I saying after that? Updates. I keep forgetting that. Okay, chalo. This is much easier. Kya hua isko yaar? The manual variant has 380 Nm of torque, and I can't do my PTCs here. Slap the person who made these speed breakers. भाई जब गाड़ी की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा उसमें जो देखने वाली चीज होती है ना कि वो रोड पे जो है वो कितनी कामयाब है और वहां पे वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है। और अगर इसकी रोड परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी है। वैसे मुझे ऑफ रोड के लिए तो बहुत ही कमाल की ये लगी है, क्योंकि बाकी सारी भी हम लोग गाड़ियां देखते हैं कि मतलब अगर रोड्स पर वो अच्छे से चल रही है, लेकिन क्योंकि जो ये गाड़ी है इस तरह से बनाई गई है 4x4 है ना, तो मतलब उसके वो सबसे बेस्ट ये है कि ये देखना कि ऑफ रोड पे ये कैसे चलती है।
बट मुझे आज की वीडियो की सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उन्होंने सिर्फ इसी क्वालिटीज ही नहीं बल्कि जो चीजें उनको नहीं भी पसंद आई वो भी उन्होंने काफी ज्यादा डिटेल में इसमें बताई है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई थी और उसकी रीजन भी मैंने बताई थी कि एक तो स्पेस में मिडल वाली जो सीट है उसके बारे में बात नहीं करती मैं भी, उस वहां पर लेग स्पेस तो बहुत अच्छी है। अगर लास्ट वाले में जाएं तो हमारे जैसे जो फैमिलीज होती है ना, अगर वो ऐसी गाड़ी खरीद ही लें तो वहां पर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लास्ट वाली पे बच्चे ही बैठेंगे, वहां पर कोई भी बैठ सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा खरीद पे इन्होंने बड़ा जोर लगाया है। इसलिए क्योंकि खरीदनी नहीं है ना, मुझे पता हम खरीद नहीं सकते, लेकिन इसलिए मैं ये बात यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बंदे के पास इस तरह की गाड़ी हो ना तो नो डाउट अगर पूरी फैमिली बंदा लेकर जाता है ना तो मेरा ख्याल है कि बीच में फिर लगेज का बहुत ज्यादा मसला आएगा, क्योंकि लगेज के लिए मुझे लगता है ऊपर वो एक क्या लगवाते हैं, स्टैंड लगवाते हैं ना, स्टैंड जो ऊपर लगवा लेते हैं ऊपर, सारी खूबसूरती अजीब सी हो जाएगी ना। तो फिर क्या करें, जो बैक रो के लोग होंगे उन्होंने कहेंगे अब अपनी गाड़ी ले लें। हाँ ये हो सकता है। तो मुझे वैसे वाकई में लगेज के लिहाज से बिल्कुल भी उस तरह से स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर मतलब 7 सीटर है ना तो फैमिली अगर पूरी जा रही तो फिर लगेज कहाँ जाएगा। हाँ वैसे ये इशू जो है आपको इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए ना इनके, आप अगर एंड वाली रो को छोड़ से बंद कर दें तो मेरा ख्याल है गाड़ी जो है वो अच्छी है। एक जो 3 से 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स पे जो फैमिली होती है उनके लिए एक अच्छी गाड़ी है, खासतौर पर अगर आप पहाड़ी इलाकों पर जा रहे हैं तो उस लिहाज से देखा जो काफी अच्छी है। अच्छा इसमें 2 वेरिएंट है, एक डीजल है एक पेट्रोल है। वैसे डीजल और ऑटोमेटिक भी दोनों है। हाँ वो तो ट्रांसमिशन में है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ फ्यूल में, लेकिन क्या कहते हैं उसे डीजल में जो है दिल काफी ज्यादा खराब होता है। यही पूछा था, हाँ। वीडियो देखते हुए बोला नहीं, मैंने कहा मैं बाद में मौजूद से पूछूंगी कि हमारे साथ वैसे ऐसा होता है कि अगर हम लोग डीजल वाली गाड़ियों में बैठते हैं ना तो हमें वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा दिल खराब होता है। पेट्रोल वाली गाड़ियों में नहीं होता, पेट्रोल वाली गाड़ियों में भी होता है ऐसे लोगों का, मेरा तो नहीं होता वैसे इतना, लेकिन खाना खा के अगर जैसे मैं बैठती हूँ फिर मुझे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन डीजल वाली गाड़ी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, उसमें तो बैठते साथ ही अभी तबीयत खराब होती है। अच्छा वैसे डीजल वाली गाड़ी जो है कभी उसकी ड्राइविंग की जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन जो है पेट्रोल वाली गाड़ी की हुई है। पेट्रोल में भी अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर आप CNG वाली किट लगवा लेते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। पेट्रोल जो है वो गाड़ी को काफी ज्यादा स्मूथ भी एक तो रखती है, और दूसरा अगर देखा जाए तो पिक बहुत अच्छी जो आपकी होती है ना, पिक जो होती है ना गाड़ी, किक होती है, पिक होती है गाड़ी में, कौन सी किक होती है? मैंने कहा शायद उसमें तो किक मारते हैं मोटर बाइक में, और हो जाता है इसमें, हाँ नहीं इसमें सेल्फ मारते हैं यार। हाँ गाड़ी में कौन सी रक्षा चला रही है, टाइम हो गया ना इसलिए भूल गई हूँ मैं। अच्छा लेकिन वगैरह में सेल्फ जो मारते हैं, जो स्टार्ट करते हैं गाड़ी जैसे स्टार्ट करते हैं, हाँ मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगी मौजूद वाली कि काफी ज्यादा स्मूथ होता है पेट्रोल पे। बहुत ज्यादा हंसो ना, कल आपने गलत जवाब दिया था जो बाइक्स वाला था ना, मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ लिए थे कि इक्वल जरूरी नहीं है कि दोनों के, और कल वाली बाइक का जो है वो इक्वल नहीं था। मतलब मैं मौजूद मुझे ऐसे प्रेटेंड करें कि मैंने बहुत स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लिया मौजूद से। भाई देखिए अगर मैं यहाँ पे बाइक्स की अगर कल की बात करते हैं ना तो यहाँ पर जो बाइक्स देखने को मिलती है ना वो आपको जो हाइट में टायर होते हैं ना वो आपको इक्वल देखने को मिलते हैं। उस बाइक की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो मुझे नहीं एक्सक्यूज नहीं देख रहा, जो कल बाइक देखी भाई मुझे भी इक्वल ही लगे, ठीक है ना। मैं ये अगर कहूँ कि मुझे इक्वल नहीं लगे, मुझे इक्वल लगे, ओके ठीक है ना, मुझे नहीं लगे थे, बट थैंक यू भाई जिन लोगों ने मुझे बताया, मेरा कॉन्फिडेंस जरा और अच्छा हो गया। नहीं कल वाली बाइक का बताना था कि वो दोनों इक्वल थे कि नहीं। हाँ तो कल वाली बाइक के बारे में तो बताया था, रॉयल एनफील्ड के बारे में, उसी में कमेंट में आया था। बट ये कि क्योंकि मुझे इतना ज्यादा ऑनेस्टली गाड़ियों का और बाइक्स का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट वीडियो देख कर आपको पता चलता है कि भाई किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और जिस डिटेल में इन्होंने वीडियो में बताया उसकी एक एक चीज के बारे में, तो मैं ये बात सोच रही थी कि जब आप किसी लाइन में जाते हो ना फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में पता चलता है। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा वैसे अगर मैं गाड़ी की बात करूँ ना तो गाड़ी का इंटीरियर जो है वो मुझे काफी ज्यादा फाइन क्वालिटी का लगा। इससे पहले हम जो मूवीज में जो स्कॉर्पियो का जो पुराना मॉडल देखते हैं जो पुलिस वालों के पास अक्सर हमें देखने को मिलता है, वो इतना ज्यादा जो है ना इंटीरियर उसका जो है इनके फाइन नहीं लगता जितना मुझे इसका जो है देखने को मिला है।
बोला हाँ 20 साल के बाद आई थिंक हाँ एक चेंज आया है, काफी ज्यादा वो एक चेंज तो काफी ज्यादा जो है इसमें एक तो कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पुराने वाली महिंद्रा की बात करूँ वो या तो व्हाइट कलर का तो कंफर्म है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ब्लैक कलर में भी वो देखी हुई है। अगर इसकी बात करें तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट कलर्स के साथ आई है, और ये वाला कलर जो आज हमने देखा ना ये मुझे ज्यादा पसंद आया है। ये स्किन हाँ ये मुझे ज्यादा पसंद आया। हाँ हालांकि कल हमने ब्लैक में भी देखी थी, ग्रीन में देखी थी, सॉरी 2 दिन पहले, और रेड में देखी थी। इसमें भी जो है रेड भी दिखाई गई है, लेकिन क्रीम वाला कलर मुझे ज्यादा पसंद आया। अच्छा वैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि डीजल पे मतलब ऐसा बोला जाता ना कि जब आप पहाड़ों वाली साइड पर जाते हो तो डीजल वाली गाड़ियां जो है वो ज्यादा अच्छी रहती हैं। असल में डीजल इंजन पावरफुल ज्यादा होता है पेट्रोल से। लेकिन मैं ये बात देख रही थी कि जो हम लोग इनका रिव्यू सुन रहे थे उसमें उनको पेट्रोल वाली जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही थी, स्मूथ लगी है ना ड्राइविंग में। डीजल वाली स्मूथ नहीं होती ज्यादा क्या? मुझे डीजल का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी क्योंकि पेट्रोल पे है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि 4x4 गाड़ी है, ठीक है ना, यानी कि चारों टायर जो है वो जोर लगाते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मस्त है। हाँ वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये मुझे डिफरेंस नहीं पता, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ जिन लोगों को आइडिया वो हम लोगों को जरूर बताएं। अच्छा हाँ, मुझे ये चीज भी अच्छी लगी कि जिस तरीके से चार्जिंग का पॉइंट, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स है। बाकी मुझे लगता है कि आप ना बाकी चीजों में काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाते हो, जैसे जो साइड डोर्स हैं उनमें चीजें रखने के लिए स्पेस जो जिस तरीके से बताई थी कि इतनी ज्यादा नहीं है, या थोड़ा टाइट है, तो बट मुझे लगता है कि वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। बट ये कि जो एक मुझे लास्ट वाला जो सबसे ज्यादा मुझे ड्रॉबैक नजर आया था ना, वो सिर्फ एक मुझे बूट स्पेस वाला लगा था, और लास्ट वाला भी जो है ना वो भी एडजस्ट हो जाता है कि आप ट्रैवल कर लेते हो वहां पर। देखिए जब मजबूरी हो ना फिर सारे ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन हाँ जो बूट स्पेस है वो जरा थोड़ा सा इशू है। हाँ उसमें ये चीज है कि अगर आपने टूर पे जाना है तो आप जो है इतने लोगों के साथ जाएं जो 4-5 सीटों पे पूरे आ जाएं, पीछे वाली सीट जो है ऊपर ही सामान रख लें अपना नहीं जो सामान रखे उसके ऊपर ना बैठ जाए। हाँ ये भी हो सकता है। बट ये जो ऑफ रोड वाली जब एक क्लिप हम लोगों ने देखा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से जितनी भी मड में जिस तरीके से जा रही थी, कुछ तो वाकई में इस तरीके से वो जा रही थी, मैं तो डर गई हमारे जैसे लोग अंदर बैठे ना चीखे मारना शुरू हो जाएंगे कि भाई हमें उतार दो। बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी एक तरफ को, तो वो काफी ज्यादा एक मैं कहूंगी कि एडवेंचरस था। बट ये कि अगेन जिन लोगों को शौक होता है उनके लिए मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है। हाँ और फिर इसमें एक और चीज जो है, इसमें 6 सीटर भी जो है वो गाड़ी आपको जो है मिलेगी, तो उसमें जो है इन्होंने वो भी यूज की थी जिसमें जो है 2 सीटें थी और बीच में जो है वो आर्म रेस्ट थे। तो वो चीज हाँ वो भी अच्छी थी, यानी कि आप 3 लोग भी बैठ सकते हो और आप चाहें तो आप 2 लोग भी बैठ सकते हो इजीली। वैसे मैं सोच रही थी अगर आगे 2 लोग बैठे ना तो बीच में एक स्पेस निकल आती, पीछे वालों के लिए वो फिर टांगे आगे कर सकते हैं या सामान भी वैसे रख सकते हैं वहां। बिल्कुल। बट भाई सबसे मस्त है इसकी प्राइस, मुझे इसकी प्राइस बहुत अच्छी लगी है, और सनरूफ भी है, सनरूफ सबको बहुत पसंद आता है, खास तौर पर जब बारिश हो रही हो, आपके हाथ में एक कप का वो एक कप का नहीं एक चाय का कप हो ना, चाय पीने से मना किया है तुम्हें पता नहीं है, एक कप चाय फिर मांग एक कप कॉफी हो, ठीक है ना, कॉफी से मना नहीं किया, चाय से मना किया हुआ है। और आपने जो है सनरूफ का जो नीचे उसका वो ब्लाइंडर आप कह लें यार वो जो नीचे वाला कवर होता है मुझे से पता नहीं क्या कहते हैं, एक तो ऊपर मिरर होता है ना, बस मिरर बंद हो और नीचे से आप ऊपर देखें कितना मजा है जब ऊपर से बारिश पड़ रही हो। मौसम मेरे पास ऐसी गाड़ी हो तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी कितना मजा आता है। मैं ताबेदार। मौसम देखा जाए तो वैसे ये मिनी विस्टा डॉम हो गई ना अगर मतलब सनरूफ की बात करें तो कह सकते हैं मिनी विस्टा डॉम अपना पर्सनल। एनीवे गाइस ये तो थी हमारी वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, ये तो सनरूफ है लेकिन जो पैनोरामिक रूफ्स होते हैं ना मुझे वो गाड़ियां भी बहुत पसंद आती हैं। भाई मौसम ने मुझे इंटरप्ट नहीं किया, मौसम ने रोक दिया कि भाई मत जाओ अभी मत जाओ। मौसम और कुछ बोलना है? नहीं अब चले तो चलिए अब चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी आज की वीडियो, एंड आई होप कि जो लोग तो जिन लोगों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे मेरी बात को कि लाइक मुझे स्पेस बहुत कम लग रही है, कुछ लोग कह रहे थे कि ईमान आर यू किडिंग तुम्हें स्पेस इतनी कम लग रही है, तो मुझे स्पेस उस सेंस में कम लग रही थी, अपने लिहाज से कम नहीं लग रही थी। असल में ना ईमान दी को विस्टाडोम की सीट से बीच जो स्पेस है ना उतनी स्पेस चाहिए थी यार नहीं मैं वैसे मैं
ऑनेस्टली बोलूं, मैं तो बड़ी एडजस्ट करने वाली बंदी हूँ। मतलब मैं तो लास्ट रो में भी, लास्ट सीट में भी बैठ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट टाइम पर भी जब हम लोग गए थे, ट्रैवल किया था हम लोगों ने कश्मीर का, तो मैं सबसे लास्ट में अकेली बैठी हुई थी। लेकिन अगर उसमें भी बात की जाए ना तो लेग स्पेस इतनी ज्यादा नहीं थी, वो कम थी उसमें ना काफी। इसमें काफी बेहतर थी। नहीं इतनी होती है। नहीं यार, ये बेहतर है उससे, वो ज्यादा तंग थी। शायद फिर मैं वो अकेली थी सीट पे, तो कभी टांगे इस तरह से फैला ली, उस तरह से फैला ली, बट मुझे कोई दिक्कत उस तरह से इतनी ज्यादा खास नहीं है। अकेली बैठी हुई थी ना, 4 लोगों की जगह पे हमसे पूछे जो 3-3 4-4 लोग एक सीट पे बैठे हुए थे। मर्जी से आगे बैठे थे क्योंकि तुम्हारा दिल खराब होता है। इसको ना मतलब वो होता है ना, मतलब जल्दी से अपने ऊपर सिंपैथी लेने। आप ये भी तो कह सकते हैं सारे पीछे आज मौसम को अकेला बैठने थे। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।